इसने हमें तबाह किया। अब उसको फोन मिल गया वापस, कुछ प्लानिंग कर रहे, गेम खेल रही है, वो कातिल है। लड़की ने कह दिया और उसने फौरन मान लिया। कहाँ चला गया हमारा बरलास? तो बरलास बच्चा, हम तुमको बहुत मिस कर रहा था। तुम मुझे पहले एक चीज बताओ कि बादशाह खान चनार खान से बड़ा है या छोटा है? बड़ा। तो वो उसको बार बार चची क्यों कह रहा है? बरलास ताई कहेगा, ये बहुत बड़ा फॉल्ट हमको नजर आया। तो वो सीन जो हमारा फेवरेट सीन था, छोटा हो फिर। हाँ नहीं, बड़ा है। और इस वक्त मुझे बादशाह खान पे सारा फोकस है, बिकॉज मुझे बादशाह खान की जो अंदर एक स्ट्रगल जो चल रही है ना, वो साइलेंट स्ट्रगल जो चल रही है, ओह आई लव इट। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेडिंग, वहाँ जो उसके लुक्स जब माँ देख रही होती है, यू नो लाइक he is there but he is not there, but there is something so wonderful about his character. He is a good man. बरलास ना बादशाह खान is a good man. लेकिन अंदर से उसकी एक स्ट्रगल चल रही है कि मैं खुश हूँ ना हूँ। बीवी का सोचता है, उसका सोच। शादी वाले सीन पे जब ये लड़का आता है, जस्ट हिज एक्सप्रेशंस, जब ये रिश्ता मांगता है, जब ये कहता है ना कि इनकी शादी होनी चाहिए, जस्ट द वे ही लुक्स एट like an unbelievable look कि तुम क्या बात कर रही हो। I feel also there चनार खान should have thought about it. उसको एक दो दिन सोच के फिर उसको करना चाहिए था। उसने, वो लड़की ने कह दिया और उसने फ़ौरन मान लिया। So मेरा जो सारा फोकस इस वाले पे, but even बरलास, I have to give him a clap again. I think बरलास is back, because मैं सोची थी कहाँ चला गया हमारा बरलास, लेकिन बरलास आया और उसने हर सीन अपना। बरलास की आंखें बोलती हैं, वो उसका, you know, his face is so expressive and yet it's monotonous, you know, like he doesn't have, but something about him that he's Bरलास, that was the, for me that was a dark scene, because I suddenly started imagining this woman where this boy is asking him वो कातिल है, you know, he murdered your son. How can you even ask for forgiveness? हाँ? एक बच्चा उसका। वही मैं कह रही हूँ, I just thought that was such a struggle. It must have been such a struggle. वो मान तो गई है end में, लेकिन I think she's been broken down. And there again, और वो उसको जो फूट के रोती है ना हिना ख्वाजा, that was so good. But even him, हाँ, वो कहते हैं मैं बनूंगा पामी, मैं बनूंगा, और वो उसको। But yeah, this whole thing of what Nadia said, for me that was a very dark scene, and it was probably my favorite. A very scene. disturbing scene as well. Very disturbing. But then I agree totally with Rubina that I think what should have been happening side by side is, अब उसको फोन मिल गया वापस, ठीक है, अब मुझे लगता है लैला अभी भी गेम खेल रही है, उसको फ़ोन वापस मिल गया। अब वो उसने तुमने बता दिया, उसने कहा ना कि बाहर नहीं जानी चाहिए खबर, लेकिन बाहर चली गई खबर, बिकॉज वो पूरी खबर उसको आके अपने दोस्त को सुनाता है। अब दोस्त को सुनाने के बजाय अगर वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे होते, कुछ कर रहे होते कि साइड बाय साइड सम टेंशन शुड हैव बीन क्रिएटेड, देयर वाज नो टेंशन, यू नो, एंड स्पेशली इन दैट ब्रेकफास्ट वाला सीन जब सारे खुश हैं, शी सेड it will probably come in the next episode, but I think side by side things should have been happening. I think that's where the story, we lost it slightly. So I am going to emoji. Oh, emoji देनी, हाँ मैं तो वो दे रही थी. So I'm also going to give it one thumbs up. The one thing that I was missing was that there's a lot of talk, but the tension was not there. There was no tension in this thing, whereas I think जिस तरीके का ड्रामा है, I want blood, जिस तरीके का ड्रामा I think they should have been. खाई देखने के बाद आपको ऐसी बीमारी लाहक हो सकती है, ठीक है? Because आपने इतना, जैसे कहते हैं ना वो, जो चिखा दिया, अभी ये करेंगी जाके. So where is the tension, man? I need the tension. I want the tension. So anyway, so there was too much talk, not enough tension. फिर मुझे एक और चीज़ जो लगी कि अपारा जो अपने बाप को सडनली, आप मेरे ये थे, आप मेरे वो थे, हाँ वैसे कभी भी नहीं, शुरू में कोई ऐसा सीन नहीं था, एक ही सीन था अपारा और बाप का जिसमें आके कहता तुम घर से कभी नहीं निकलोगी, ब्ला 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 करके वो चले जाते। सो आई फेल्ट दैट आल्सो, इट वाज अननेसेसरी, इट डिडंट नीड टू कम इन, शी कुड जस्ट टॉक्ड अबाउट हर फादर, बट मुझे तो लगता है कि शी इज अ पर्सन हु वुड बीन स्कैर्ड ऑफ हर फादर अदर देन, बट व्हाट आई रियली लव्ड वाज द वेडिंग सीन when they are with the guns in the back and she is looking. And even though she was happy about the wedding, but
वो एप्रीहेंसिव है बिकॉज उसके माइंड में है कि ये जो चीज़ है इसने हमें तबाह किया हुआ है, ये जो चीज़ें मेरे पीछे, और उससे वो एक प्रॉमिस लेती है। आई थिंक दैट सीन वाज आल्सो ब्यूटिफुली शॉट। आई लव द क्लोजअप्स, आई लव देयर केमिस्ट्री, उनकी आपस की एनर्जी बहुत मज़े की थी। एंड वो उससे प्रॉमिस करती है कि यू नो वो, लेकिन वो फिर भी कहता है कि बस दुश्मन मर जाए उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू। एंड शी यू नो वो कहती है कि भाई स्टॉप इट नाउ बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, बट आवर लाइफ हैज़ started on a murder which this boy is committed, you know. So I thought that was also it was a lovely message to put out there, beautifully put out there. Writing के numbers, I will give it definitely an 8. So ये सारी जो बातें हुई हैं with the flaws and everything, होता है, हम सब ने किया, लेकिन हमने फील किया ड्रामा, हमने लोगों की इमोशंस को फील किया है, हमने सिचुएशन को फील किया है। शी इज़ कॉल्ड द वेडिंग डार्क, दैट मीन्स इट वाज शॉट दैट वे। द डायरेक्टर पुट दैट फीलिंग अक्रॉस टू अस एंड आई थिंक दैट टू मी इज़ उससे यू नो यू कांट। सो इफ़ यू कैन फील इट, baby, I will still be a little conservative. कोच हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव होगा लेकिन हम तुमको देगा 9. So basically we're judging her on that one scene and rightly so, because आप जब तक उसको फील नहीं करेंगे इस किस्म की इमोशंस नहीं आ सकती। And she felt it. She made herself feel it. She put herself in that. Because you have to get into those. The acting is all about getting into the shoes of that character. वो कैरेक्टर जो है एक टूटा हुआ इंसान है, एक गुस्से से भरा हुआ इंसान है, एक डिसअपॉइंटेड इंसान है, अपने मियाँ से डिसअपॉइंटेड है कि उसने क्यों नहीं किया। दैट सीन वी सॉ वेयर शी इज यू नो बिकॉज शी वांटेड टू टेक द पिस्टल एंड शूट द गाय बरलास। एंड वो सारा जो है ना वो आई थिंक इस सीन में निकला है। उसकी जो एक वैसे कैथारसिस ही होगा या जो भी है, वेदर शी इज़ फॉरगिवन हिम और नॉट ये हमें नहीं पता। व्हाट शी पॉइंटेड आउट मैंने नहीं देखा, मैं ज़रूर जाके देखूँगी। दैट डेफिनेटली इज़ समथिंग दैट वन हैज़ टू, बट दैट सीन इज़ डन सो ब्यूटिफुली। She had a strong actor, she herself was so strong, and I think उन दोनों का जो एक mix था, it was just absolutely wonderful. So I'm going to give her an 8.5 for sure. तो बरलास बच्चा हम तुमको बहुत मिस कर रहा था और मेरा यही था, मैंने कहा कहाँ चले गए, मैंने कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, what hole did you know like have you been shot, are you not here, where are you? And फिर जब ये बच्चा आता है ना स्क्रीन पे, he like I said, he fills up this. Just I mean like he said a few things to her वो जब उसके क्या कहते हैं जाके मिलता है, जब जाके उसको मिलता है, and then you know when she stops him and he turns and looks at her and he's got these teary eyes, oof, it was just so expressive. Then उसको पता चलता है कि I'm getting married, वो जो खुशी जो अपने अंदर वो contain नहीं कर पा रहा, that उस सीन के अंदर भी when the father says कि लेकिन ये जो शादी होगी किसी की मौत के ऊपर, you know just the highs and the lows, and of course then शादी का पूरा sequence, I love the wedding night sequence, but the icing on the cake of course was this Hina and Barlas scene, and he just did such a good job. Again वो मैं कह रही हूँ कि आप अपने रोल के अंदर जब घुस जाते हैं, आप उन जूतों में चले जाते हैं, आप वो चीज़ें फील करते हैं, तब जाके ये एक्टिंग आती है। एंड बच्चे वेरी गुड, आई एम गोइंग टू गिव यू अ 9 आल्सो।